Brand identity, I feel like, is a very core part of any fashion brand. Just like अगर आप उसकी design philosophy पे बात करते हैं, उसी तरह उसकी identity भी उतनी important है. एक जो आप shoot देखते हैं social media में, ये जो हर आजकल it's back to back campaigns आ रही होती है, it is a lot of planning and hard work in it. जहाँ OOH मीडिया पे आप 10 साल पहले heavily reliant थे, अब डिजिटल ने आपकी गेम आसान कर दी. अब हर ब्लॉगर की एक पर्सनालिटी है, उसकी एक इमेज है, आपने ब्रांड के साथ उसको अटैच करना है. अगर हाई एंड ब्रांड है तो एक्सक्लूसिव ब्लॉगर्स है, अगर कमर्शियल ब्रांड है तो कमर्शियल ब्लॉगर्स है. बट अगेन दोज ब्लॉगर्स वो ब्रिंगिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक. कंटेंट इज समथिंग दैट जब आपकी ऑडियंस देखती है तो उससे कनेक्ट कर सके, रिलेट कर सके. जितना अपने आप को स्ट्रांगली डिज़ाइन करेगी, जितना स्ट्रांगली अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करेगी, उतना ही वो मार्केट में डिस्टिंग्विश होगी, उतनी स्ट्रांग पोजीशन बनाएगी. Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by Future Fest. Today we have a guest with us. She's very lovely, very pretty and very much talented. She did her double majors in marketing and finance from LSC, started her journey as an intern, and then throughout her e-commerce journey, she has worked with PR companies and with Diamond Form as well. And then comes the major part. She started working in Beechtree. None other than Nabia Saqib. Nabia, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत? How are you? I'm good. Thank you very much. You're looking very good, very beautiful, Thank very you so pretty. much. Thank ठीक you. है, as usual, as always. मुझे ये बताएं कि thank you very much for coming. अपना time No आपने problem. निकाला. I feel honored. Well, thank you very much because I understand you have a very busy schedule because इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है तो वो फिर मल्टीटास्किंग भी होता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हो जाती है और आपकी है सिंस आई पर्सनली नो यू. So mashallah, you are doing good, great, adding value to the industry. The reason to have the podcast was this, for you to share the insights of the e-commerce, sales, the social media. असल में जो ये mostly we people are operations हमारे बड़े अच्छे होते हैं, तो we understand कि operations में क्या होता है, order delivery, management, सारा कुछ. Today we will be discussing the other part, जिसकी हम चाहते हैं, the creative side, the shoot side, the PR side. बिकना या नहीं बिकना, that is something else. Objective end game वही है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद की जो जर्नी है जो आप स्टार्ट करती है, you're part of it. We'll discuss that. Please introduce yourself and how did you enter into the industry and how did your journey started, and once you come to the Beechtree, then we'll discuss about Beechtree as well. Okay, so I got graduated from LSC in 2017. ठीक हो गया. And I always have that marketing ka passion, and I'm glad that I did my majors in marketing. उसके बाद I worked with Diamond Supreme Form and Dolce Vita Home for a year, but my main interest was going towards the fashion side. Okay. Because it gives you a lot of opportunity as a marketer to do a lot. So right now, what the role I'm playing is fashion strategic marketer, where I help brands to establish brand identity and brand awareness. Brand identity, I feel like, is a very core part of any fashion brand. Just like अगर आप उसकी design philosophy पे बात करते हैं, उसी तरह उसकी identity भी उतनी important है. आइडेंटिटी इज कि आपकी ब्रांड दिखने में क्या है, आपका कस्टमर कैसे कनेक्ट करता है, उसको कैसे परसीव करता है, उसके बारे में कैसे फील करता है. जब तक आपका कस्टमर उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता, दे वांट लाइक व्हाट इफ से कि वो आपकी ब्रांड को रजिस्टर नहीं कर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्रिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स है मार्केट में, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अपने आप को. सो इसमें एक डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें वी से कि इन टुडेज टाइम डिजिटल एरा आपकी ब्रांड की इमेज या आइडेंटिटी सोशल मीडिया से खास तौर पे बनती है, स्पेशली इंस्टाग्राम. और उसमें द डायनामिक्स आर दैट द वे योर सोशल मीडिया पेज लुक्स लाइक, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. हमें तो देखने में भी ग्रिड नज़र आती है, बट उसके पीछे बहुत प्लानिंग होती है. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक कलेक्शन है आपकी, उसका शूट का क्रिएटिव मूड बोर्ड क्या होगा, व्हाट डू वी वांट टू शो इट टू द ऑडियंस. फिर उसमें टीम कौन सी आप अलाइन करेंगी. देयर आर डिफरेंट फोटोग्राफर्स इन इंडस्ट्री, एवरी फोटोग्राफर हैज इट्स ओन यूएसपी, सो यू हैव टू पिक द राइट वन फॉर दैट पर्टिकुलर कलेक्शन. उसमें मॉडल्स कौन सी होंगी, हु इज गोना वेयर दैट आउटफिट, जो आपकी ऑडियंस से कनेक्ट कर सके. बिकॉज हर चीज़ आप साइकोग्राफिक्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं. यू कांट जस्ट रैंडमली डू दैट, यू हैव टू वेरी कीनली लुक इन. There should be a reason for every decision, for every angle as well. Exactly. So हर चीज़ की रीज़न होती है. अगर आप मूड बोर्ड भी उठा रहे हैं तो वो आपकी कलेक्शन को कैसे उठाएगा और कैसा डिस्टिंग्विश करेगा अपने कंपेटिटर में. सही है. फिर उसमें लोकेशन आप हंट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे ये शूट कराना है, या इसकी आर्ट कैसी होगी. तो उसमें आर्ट डायरेक्टर्स आते हैं जो कि आपके लिए पूरा सेट बनाते हैं, पूरा एक एम्बियंस शूट का क्रिएट करते हैं.
And then there is what do you say, फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, स्टाइलिस्ट प्लेज अ वेरी कीन रोल, क्योंकि उसने आपकी जो पूरा आपके आउटफिट को जो लुक देनी है वो स्टाइलिस्ट ने देनी है, तो यू हैव टू पिक द राइट स्टाइलिस्ट एज वेल। सो ये सब एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो आप शूट देखते हैं सोशल मीडिया में, ये जो हर आजकल बैक टू बैक कैंपेन्स आ रही होती है, इट इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड हार्ड वर्क इन इट। और फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि इस शूट को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, एक आपकी ऑडियंस से अटेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे पहले इंस्टाग्राम स्टैटिक होता था, नाउ रील्स एंड शॉर्ट्स एंड टिकटॉक, so many things have been introduced by the social media platforms एग्जैक्टली। तो अब आप वीडियो भी जो कंटेंट बना रहे होते हैं, हैज टू बी वेरी एंगेजिंग। यू जस्ट कांट रैंडमली मेक एन आउटफिट ऊपर से नीचे चलती हुई मॉडल की वीडियो, हैव टू क्रिएटिवली थिंक कि किस तरह का कंटेंट बनाए कि ऑडियंस इसको ऑर्गेनिकली जैसे ब्रेन शूट्स में और जो डिसीजंस और ऑपरेशन शूट्स में इन्वॉल्व होते थे, सेम थिंग अब जा रही है, बिकॉज वीडियोस इन्वॉल्व, इट्स नॉट स्टैटिक का फ्रेम बना के ड्रेस लगा के वी यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, बट इट डजंट वर्क दिस वे नाउ। इट डजंट वर्क। सो आपकी इवन डिजिटल एजेंसीज भी कहेंगी एंगेजमेंट के लिए वी नीड दिस, इवन वी ourselves from the audience perspective, हम भी देखते हैं कि जो engaging या creative content है उसको लोग ज़्यादा attention देते हैं as compared to basics। So ये आपकी हो जाती है brand identity, कि आप brand जो बिकती भी है वो identity से बिकती है। अगर आप देखें इंडस्ट्री में 2-3 बड़े डिज़ाइनर्स ने नाम बना लिए, आपका हो गया इलान, हो गया सफ्यूज़, हो गया, अब हर कोई कहते हैं इलान बना दे, सफ्यूज़ बना दे, बिकॉज these people really worked hard on their identity, they have distinguished themselves. So that's the power of brand identity. दूसरा part is brand awareness. क्या आपने बना तो लिया ब्रांड, दिखती कैसी, लेकिन अपनी ऑडियंस को बताना कैसे, उन तक पहुंचाना कैसे, that's the awareness part, and it's very crucial. So उसमें भी over the time the marketing industry or the fashion industry has evolved. जैसे कि आपका डिजिटल एरा आया, जिसमें जहाँ OOH मीडिया पे आप 10 साल पहले हेवली रिलाय थे, अब डिजिटल ने आपकी गेम आसान कर दी, एंड इवन स्टार्टअप्स कैन इजीली एंटर द मार्केट। उसके साथ सब PR, आई थिंक सो पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री की बात करूं तो PR ना बहुत हैपहेजेडली होता है, उसके माइक्रो लेवल पे उसको एनालाइज नहीं किया जाता कि आपने एक ब्लॉगर के साथ कोलैब किए तो उस पे क्या आपको रिस्पांस आया है, क्या एंगेजमेंट है। बहुत very few people know the objective of doing the PR as well, because you cannot gauge conversion with the PR, because it brings, जिस तरह SEO brings traffic, इसी तरह this brings you engagement and traffic, and then eventually you convert into the conversion. It's your responsibility. It's very important, और ये ऑर्गेनिक होता है, तो ये भी आपकी ब्रांड इमेज में ऐड करते हैं। अब हर ब्लॉगर की एक पर्सनालिटी है, उसकी एक इमेज है, आपने ब्रांड के साथ उसको अटैच करना है। अगर हाई एंड ब्रांड है तो एक्सक्लूसिव ब्लॉगर्स है, अगर कमर्शियल ब्रांड है तो कमर्शियल ब्लॉगर्स है, बट अगेन दोज ब्लॉगर्स वो ब्रिंगिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एट द एंड ऑफ द डे आप PR कर ही इसलिए कि आपको उनकी ऑडियंस मिले, उधर से सेल्स आए। We're not just doing it for collaboration. Yeah, and give it sales, yeah, but you need in the process you need to understand the norms of the industry as well. कि norms क्या हैं, क्या करना है, क्यों करना है। तो shoot और PR, शूट और PR जो है बेसिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नॉर्म्स उनके भी एक जैसी है कि शूट करना है तो क्यों करना है, कौन से एंगल्स, कौन सी सेलिब्रिटी, कौन सा डे शूट है, नाइट शूट है, ये सारी चीजें। इसी तरह PR में भी यू नीड टू फाइंड आउट all the depths, who is the right blogger, what sort of content is making, is it all the redundant content or is it exclusive? Because there are two things in when you're trying to find an influencer for yourself. Some influencers, celebrities, for example, I got Aiza Khan. ठीक है, अगर आप उनकी देखेंगे तो followers are in millions, but current engagement भी तो देखनी पड़ती है, क्योंकि game is of the content. बिल्कुल, सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, आई अंडरस्टैंड, बट इंस्टाग्राम के लिए सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर नहीं। इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिथम के मुताबिक देखना है कि किस पे कंटेंट कौन कितना रैपिडली दे रहा है। बिल्कुल, और आपने इतनी अच्छी बात की है, बिकॉज इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा आ जाती है। जब आप सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करते हैं, वो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस लेके चार्ज तो कर देते हैं, पर वो डिलीवर नहीं करते हैं। स्पेशली आजकल मैंने देखा, जब आप सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करते हैं, द कंटेंट क्वालिटी इज सो पुअर। एक एवरेज सेलिब्रिटी आपको 2 से 3 लाख चार्ज करेगा, या 5 लाख भी चार्ज करते हैं, और वो अपने फोन से घर के सोफे पे बैठे हुए पिक्चर लेंगे, and they don't promise, and they don't care what it happens। and आप भी देख के कह सकते हैं कि ऑडियंस में आम बंदा भी इससे ना रिलेट कर, वो अपनी ऑर्गेनिक पिक्चर्स तो बहुत अच्छी ले लेंगे, जहाँ ब्रांड कोलैबोरेशन आती है वो फॉर ग्रांटेड होती है। एंड आई डिड अ कोलैबोरेशन विद मेनी सेलिब्रिटीज, लेकिन पर्टिकुलर एक सेलिब्रिटी के साथ करके आई वाज शॉक्ड कि we got literally no engagement, even the content was quite flat. अच्छा नाबिया, do you agree on this? For example, एक सेलिब्रिटी है, million followers है, engagement is very good, but from word of mouth and past experience we know this, that वो अच्छा content नहीं बना के देगी, and she's very rigid and she won't care, मतलब पैसा tough time as well, content time पे नहीं देना, content जिस तरह का बोला उस तरह की नहीं बनाना, brief for
बिकॉज आप जिस तरह आप जो आपकी तरह के लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, You जो always give a guideline. ये जो आप गाइडलाइन, क्योंकि देखिए एक मेहनत से आपने गाइडलाइन बनाई, अब वो पीआर करने वाला या वाली अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा, तो योर एफर्ट गेट वेस्टेड Yeah. एंड देन देयर इज नो देयर इज नो Yes. पॉइंट ऑफ इट। सो ऐसे इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से करवाना चाहिए जिसकी एंगेजमेंट या फॉलोअर्स अच्छे हैं, या ऐसे बंदे को भी तरजीह देनी चाहिए कि जो कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करके दे रही है या दे रहा है, देखिए जो कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो एंगेजमेंट ला ही रहा है, ला ही रहा है। वो ला ही गा, बिकॉज ऑडियंस इज देयर टू सी समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑफ क्वालिटी. यस, तो इन्फ्लुएंसर के लिए, सो वी कम अप टू दिस कंक्लूजन कि इन्फ्लुएंसर के कंटेंट किस तरह का बना रही है या बना रहा है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. इवेंचुअली दैट विल ब्रिंग यू द एंगेजमेंट, बिकॉज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्रॉमिसिंग यू, द एल्गोरिथम इज प्रॉमिसिंग यू, गिव मी गुड कंटेंट एंड आई विल गिव यू गुड ट्रैफिक एंड अवेयरनेस इन रिटर्न. जबकि हम अगर सेलिब्रिटीज चूज कर लेते हैं और ऐसी सेलिब्रिटी चूज कर लेते हैं जो कि हमें नहीं बना के दे रहे अच्छा कंटेंट, बिल्कुल, तो कंटेंट मैटर्स अ लॉट. कंटेंट इज द किंग. So speaking of this, what was, how did you started the journey in Beechtree? Beechtree ने आपको क्या सिखाया? आपने Beechtree के लिए क्या एफर्ट थी? क्योंकि जब हम किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं एट अर्ली एजेस ऑफ आवर कैरियर, डेफिनेटली इदारा हम पे बहुत मेहनत करता है, एंड देन इन रिटर्न इदारा भी एक्सपेक्ट करता है कि नाउ शी और ही इज ट्रेंड, now what are you going to return back to me? Please tell us your journey, how did it started in Beechtree? ओके, सो इससे थोड़ी पहले मैं थोड़ी सी करियर जर्नी बताऊंगी कि मेरा करियर स्टार्ट वाज टेरिबल. इट वाज रियली डिफिकल्ट. Humpy Dumpty rides आ रहे थे. Humpy Dumpty rides, and there was a point that I decided to give up because it was so hard as a fresh graduate. समझ नहीं आ रही थी. Politically आप कंपनीज में जब काम करते हैं ना, तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर जी, करता है, बिल्कुल. और पॉलिटिक्स आपको पता है हर जगह होती है. एक टैलेंट जब ऐसे एनवायरनमेंट में आता है ना, तो इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव. Alright. So there was a point when I decided I'm going to switch my profession, मैं instructor, teacher बन जाऊंगी, and obviously later I realized that's not my passion. So somehow internally, back if I say 2018 to 19, the year was tough. The company that I was working in, and मुझे अपनी कोई growth नजर नहीं आ रही थी, because earlier stage of career में आप सीख रहे होते हैं. You want to learn, you want to do maximum observing how the market works, how the industry works. So somehow internally I was manifesting कि मैं किसी तरह fashion industry में चली जाऊँ. Though my sister was a very established textile designer, अच्छा, I was माशाल्लाह. working with a very big brand, but it's not easy कि आप अगर कोई relative है तो आप enter हो जाते. It's on pure basis of your talent. So somehow my luck worked, and in 2019 I joined Beechtree. I was still at the earlier phase of my career, and I must say it was the best thing that ever happened to me. और मैंने जब Beechtree join किया तो मुझे ना feeling आई that I'm an outsider. उसकी बहुत बड़ी reason थी कि मैं business school से थी. जो आपने मांगा, मैं कहता हूँ मांगने में आपकी इस दुआ में बड़ी शिद्दत थी कि आपने मांगी भी फैशन इंडस्ट्री, फिर फैशन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिग प्लेयर एचकेबी, नो डाउट, Beechtree-Pepperland and big China. Morbag by Beechtree is also a Yeah, gem. that came quite later on. Yes. So उस time पे मुझे क्योंकि लेकिन quite a big name is big it you name. have on your resume. Yeah. So उस टाइम पे फैशन इंडस्ट्री के लोग या आर्ट स्कूल के लोग ज्यादा फैशन ब्रांड में होते हैं. मैं थी बिजनेस स्कूल से. हाँ, या BIFD उठा लो या NCA उठा लो. NCA उठा लें या BNU या उठा BNU उठा लो. लें. But the good thing was that the organization and culture was really good. So it really helped me to learn a lot. And because I loved this field, so मैं खुद भी बहुत सीखना चाहती थी और मैं प्रूव करना चाहती थी कि what's my talent, क्योंकि इससे पहले मौका नहीं मिल रहा था. So 1 year I really worked hard and I learned all what I can. और उसके बाद good things started happening in career. I started performing and delivering. I joined them as a team lead, and then I became HOD of marketing department. So जब वो phase of learning हुआ तो delivery phase शुरू हो गया, और उसमें one of the biggest thing that we did was launching Morpa, which is a big success in the industry. So जिसमें हमें pandemic ने एक बड़ा अच्छा lesson दिया, जहाँ e-com was booming and we understood the consumer behavior and market. So we decided why not come up with another brand with a whole different identity, with a whole different design philosophy, and capture the market share. उसमें coming up with the brand name, brand personality के अच्छा ठीक है, डिजाइनर ने डिजाइन सोच ली कि हम क्लासिकल पे वर्किंग करेंगे, लेकिन उसको अपने कम्युनिकेशन में यानी शूट्स में, स्टाइलिंग में कैसे दिखाना है, और उसको किस तरह, और उसका मोरबा का USP था कि वो एक अफोर्डेबल ब्रांड थी. आपको 3-piece अनस्टिच शूट 3-piece अनस्टिच प्रिंटेड आउटफिट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था. तो the strategy that I had in my mind was to come up with a and the growth was also amazing. Was very quick. Launch करने की देर थी, and and we were doing, it took off. The flight we took off. took off immediately. So we started first year with one collection, one season, and we used to drag it to 3 months. Strategy was also very good behind the Yes, success exactly. of The Morbag business Group. planning, and I think so. The success was the distinguished industry. Sorry, the success was because Morbag was different and distinguished than what Beechtree is, but so the quality was the same. Quality was the same, but
समझ ली कि आपने डिफरेंट एक ब्रॉड ऑडियंस को और सर्व करने के लिए एक पर्पस बना था। एंड उसमें एक और चीज भी ये कि yes, I was also monitoring the success of Mobile because you know it was a very good initiative taken by Beechtree. फिर उसके बाद hats off to you, your team, that the way you planned it. देखिए अब उसमें when you planned it, you did not take it as a startup. आपके expectations को आप लोगों ने pump इतना ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स और क्वालिटी के साथ किया कि और उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी यू डिडंट टेक इट दैट इट्स अ स्टार्टअप, चलो थोड़ा भी आ जाए बिग भी गया तो खैर है, लेकिन यू वर सोल्ड आउट एंड देन यू रीस्टॉक, यू केप्ट रीस्टॉकिंग एंड पुशिंग द आर्टिकल्स, पंपिंग द इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट. The cycle was the really cycle strong. was very very strong. It और was उसने really बहुत कुछ सिखाया आपको and I think that changed your career as well. There is when you came to know कि प्रोडक्ट की क्या गेम है, डिजाइन की क्या गेम है, शूट की क्या गेम है. यानी it wasn't just HKB या it was by Beechtree, it was Mobag itself. The product was very good and performing over there. I think so. That was where I evolved from my role. It was not just marketing, but now understanding that opened a new door for you. Exactly, understanding the strategic part of the business. Yes. कि आपकी product line क्या है, कितनी range है उसकी, width यानी number of designs कितने, उसकी depth के, यानी inventory कितनी है, तो आपकी कितनी inventory value पे आप play कर रहे हैं, आपकी फिर कितनी digital ad spend है, उस हिसाब से शूट का कितना बजट और शूट को किस तरह दिखाना है, फिर PR played a very important role. So everything worked really well together. और जिसकी वजह से we were able to pull it off as one of known name of a brand in industry. Nabia, do you agree with me? मैं खुद भी सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, हम दोनों सर्विस इंडस्ट्री से हैं. तो this is what I say to startups, this is what I say to the brands, those who want to become Beechtree or Suffuse or whatever the other brands are in the market, कि सारी चीज़ें करना अच्छी चीज़ है, वो भी ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप, पर it's about timing. E-commerce is about timing. सारी चीज़ों को टाइमली करना, सिंक्रोनाइज करके फिर उसको रिलीज करना सेम टाइम पे, दैट मैटर्स अ लॉट. अगर आपके शूट आज हो रहा है, आपका प्रोडक्ट 3 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आपकी PR हो रही है, तो जो है दिस it doesn't work this way. You have to work it. Planning is very important. Planning, yes, I think so. One of the part that Beechtree में मैंने सीखा और फिर implement किया was planning. You need to have पूरे साल की forecasting. आपके पूरी साल का सेल नंबर भी लॉक होना चाहिए, कितनी कलेक्शंस होंगी, फिर उस बेसिस पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं. Success growth will come to that part, but before that, the major part is this. Please tell us what is, you and me, we understand content क्या है. अब content की बहुत फॉर्म है, कहाँ हर प्लेटफॉर्म का अपना क्योंकि content and intent ये दो अलग चीजें हैं. We need to understand that. ठीक है, kindly, because when we will release this podcast, there will be females, there will be males, there will be business people. Those who don't know you, they will be listening to you. Obviously, you will inspire them because you have a very good, mashallah, career and a good journey as well. Please tell us, what is content? Content की क्या game है? Content, जैसे मैंने कहा, content is king. Yes. Everything revolves around it. True. So, content is something that जब आपकी audience देखती है तो उससे connect कर सके, relate कर सके, engage कर सके. That is where आप आज फैशन इंडस्ट्री में देखें तो कंटेंट ही ड्राइविंग फोर्स है जो ब्रांड को जीरो से टॉप पे ले जाती है. उसने जितना अपने आप को स्ट्रांगली डिजाइन करेगी, जितना स्ट्रांगली अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करेगी, उतना ही वो मार्केट में डिस्टिंग्विश होगी, उतनी स्ट्रांग पोजीशन बनाएगी. आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी जो कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ अपने ऑडियंस को दिखाना है वहां पे आप मेहनत नहीं कर रहे, उसकी साइकी पे नहीं वर्क कर रहे. उसने फॉर इंस्टेंस आज हम कहते हैं पीपल लव सफ्यूज की डिजाइन फिलॉसफी अच्छी, लेकिन उसका कंटेंट भी बहुत स्ट्रांग. लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप फॉर इंस्टेंस एक ब्रांड के पास जाते हैं हु इज जस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्स, उसको कंटेंट समझाना और उसकी इंपॉर्टेंस समझाना बहुत मुश्किल है. एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, जैसे आप कहते हैं ये हुसैन रिहार या डिजाइनर ब्रांड्स में और एक मैस कमर्शियल फैशन ब्रांड में डिफरेंस ये है कि डिजाइनर ब्रांड नोज कि उसने अपनी इमेज और आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग बनानी कि अपना एक बार नाम बना लेगा ना तो प्रोडक्ट वो अम्ब्रेला में जो भी बनाएगा वो, बिकॉज डिजाइनर ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को खूबसूरत दिखाने के लिए ये ऑलरेडी इतने एलिमेंट्स प्ले कर देते हैं कि उस प्रोडक्ट की या उस फोटोग्राफी या उस शूट की या उस वीडियोग्राफी की सिर्फ पेज पे लगने की देर होती है एंड बूम. और आज ट्रेंड ऑफ स्टोरी लाइन, बहुत ज़ारा शाहजहां की कैंपेन्स आप देख लें, हुसैन रिहार की कैंपेन देख लें, एक स्टोरी लाइन नजर आती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नजर आती है इन टर्म्स ऑफ इन विजुअल्स. ये चीज़ें भी ऑडियंस को बहुत कनेक्ट करती है. जितना खूबसूरत विजुअल है आपका, जितनी आर्टिस्टिक अप्रोच है आपकी, उतना ही कस्टमर आपकी कैंपेन को, आपकी कलेक्शन को और इम्पोर्टेंस देगा.
नाबिया मुझे बताया कि हमारा बेंचमार्क most of the people, most of the startups in Pakistan is Suffuse, right? Yeah. अच्छा, It was Elan, now it's it was Suffuse. Elan, it's Suffuse now. अभी बहुत सारे अभी And नए Republic players, is somewhere and बहुत सारे नए players भी आ गए। yeah. मुझे बताएं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा बेंचमार्क या टारगेट या हमें इंस्पिरेशन साबिया साची और तरुण तलानी को नहीं लेना चाहिए। वैसे स्टार्ट तो उन्होंने किया था और शायद मेरा भी इंटरेस्ट फैशन में उन्हीं की सब्यसाची की वजह ये से बना था। यस मुझे और अब तो याद है पाकिस्तान में आ चुकी है। मैं when I was working with this mattress company and I was looking on my social media and this creative beautiful campaign launched by Sabia Sachi was something जिसने मुझे You believe the content is amazing, ना? is amazing, it's beautiful, it was neutral and I think so most of the content in Pakistan is not even original. Indian brands से ही inspire हम करते हैं। It's fine, inspiration अच्छी It's चीज है। inspiration that we think, and it's amazing. Even It's amazing, knowing yes. that now we have come to a point where we come up with our own organic content. Usme, like I love the brand Zara Shahjahan, which is master in creating beautiful content. So yes, Indian brands started this, but Pakistan carrying has it also picked it up quite Yeah, quickly. picked it up. Yeah, I truly agree to that. So it's not just मतलब I think कि वो कहते हैं ना कि the vision should be bigger. Big. ठीक है। Or you keep practicing it, and there is a point you'll be having the originality. It's not क्योंकि देखिए in the meantime जब पाकिस्तानी हम जब पहन रहे हैं फराज मनान, फायजा सकलेन, सफ्यूज एंड ये सब कुछ पहन रहे हैं, in the meantime I was just going through an Instagram of an influencer and she does the makeup thing as well. तो मैंने देखा कि रिसेंटली यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में एक खातून की मेरे ख्याल से शादी हुई है। शी वाज वेयरिंग साबिया साची, ठीक है, और उन्होंने टैग भी किया हुआ था साबिया साची के पेज को। एंड ट्रस्ट मी दैट इज व्हेन आई सॉ कि यार नेक्स्ट लेवल के ड्रेसेस शी इज प्रोड्यूसिंग एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। बट यस आई डू एग्री, हम थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस ड्रेस को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे एंड इट विल गेट बेटर द डिजाइन। बट इफ आई गिव क्रेडिट टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री, जो हमारा शिफॉन लग्जरी फॉर्मल इंडस्ट्री है और जो एक ट्रेंड इलान ने शुरू किया था विद द मॉडर्न कट्स एंड विद रियली एक्सक्विजिट डिजाइन्स, दैट थिंग got quite popular in India as well. Hamari luxury chiffon is way much, or luxury formals are quite valued in India. Where did the conversation started from? It's about the give and take. We took this couture thing from them. ठीक हो गया, लेकिन हमने रिटर्न में उनको दे दिया। अब हमारी अगर हम लॉन की बात करें, हमारी बनाई भी लॉन उनके लिए हमारे लिए कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हमारे लिए मैटर करता है जून जनवरी की है या 22-23 की। They are dying to see that, they are dying to these people come and contact, because we cannot deliver in India, but there and are that's people... why the new ventures have started कि different जो fashion houses दुबई में खुलने लगे under one umbrella, different designers are yes recently इस साल भी हुआ है, a couple of my clients went there as well, and Indian celebrities are actually collaborating with Pakistani brands and a lot of people are buying, अब आप इंडिया में भी देखेंगे शादियों पे अली ज़ीशान बहुत पहना जा रहा है, ये पाकिस्तानी couture brands बहुत पहनी जा रही हैं, उनको equally वो चेरिश करते हैं जैसे हम इंडियन ब्रांड्स को करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में हमें इंटाइस कर रहा है साबिया साची और तरुण तलानी, ठीक है, लेकिन द डिफरेंस इज दिस के 1% ऑफ द पॉपुलेशन कैन हार्डली अफोर्ड साबिया साची एंड तरुण तलानी, लेकिन जो हमारे ब्रांड्स है दे कैन इजीली अफोर्ड इट, बिकॉज हम एक इकोनॉमिकल प्राइस पे दे रहे हैं कि इट्स द नंबर ऑफ डिजाइन्स वी आर प्रोड्यूसिंग एंड पंपिंग इन द इंडस्ट्री, इट्स क्रेजी कि और मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि पता नहीं यार, एक I know designers वो 3-3 ब्रांड्स की डिजाइन्स बना रहे थे, मुझे कभी-कभी ये समझ नहीं आती कि कैसे इतना ब्रेन है कि एक फूल ऊपर जाता है, एक फूल नीचे आता है, एक नया डिजाइन आ जाता है। और आप देखेंगे कि 2021 से 23 तक इतनी ज्यादा ब्रांड्स भी आ गई हैं मार्केट में कि हर ब्रांड इज ऑफरिंग अ यूनिक प्रोपोजिशन फॉर इटसेल्फ एंड देयर इज लाइक इट्स अ लॉट कंपटीशन, इट्स गुड और सब कामयाब भी हो रहे हैं माशाल्लाह, एवरीवन इज गेटिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्री, बट विद दैट इफ यू सी इट क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल, जो एक आई से द रिस्पेक्ट दैट फैशन इंडस्ट्री 10 साल पहले को कोई कहता था ना, इवन अ गाय यूज्ड टू से कि जी मैं तो फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो फैमिली यूज्ड टू से वही तुम दर्जी बनना चाहते हो, बट नाउ द रिस्पेक्ट अ फैशन डिजाइनर गेट्स और अ फीमेल फोटोग्राफर गेट्स, it's equivalent to nothing. बिल्कुल when it comes to female, we'll discuss this as well कि आज आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम कर रही हैं, major part of your day life goes visiting the factories, the industries, and देखें अब LSE से पढ़ के निकलना, हर बंदे को वो वेंटाइज कर रहा होता है, वो बड़े-बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े-बड़े टावर्स, लेकिन
you took from the industry, now you're giving it back to the industry. Being a woman, it's not easy when you go to the factories जहाँ पे total male oriented factories है सारी. You go there, you work there. Obviously you have your design team और design का part होता है. But this is good. आप सही कह रही हैं कि अब respect मिलना शुरू हो गई है individuals को. मैंने FMCG में भी काम किया था. My third year of this year में intern ही थी. अच्छा. वहाँ पे मैंने realize किया था कि इतनी women talent की space नहीं है. It's really difficult to break through there. But fashion industry is an industry that really values. लेकिन इस इंडस्ट्री ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया. एक तो टैलेंटेड भी है खातून हमारी, ठीक है, बहुत ज्यादा. It's women driven industry. It's women driven industry. Yes. I imagine I'm sitting with a business owner who's billionaire and he's still wanting to listen my expertise and advice on how to run. Yes, true. So I'll say the Khadija Shah, Sana Yasir, जो इस तरह की डिजाइनर्स थी सारी, क्योंकि ये सारे फीमेल वुमेन ड्रिवन इंडस्ट्री भी थी और इनकी वजह से सारा इनके फिर आगे जो सबऑर्डिनेट्स भी थे वो भी ख्वातीन थी, तो वो दे कैरिड दी लेगेसी, वो इसी तरह आगे कैरी फॉरवर्ड होती रही, विच इज़ ग्रेट. नाबिया, मुझे ये बताएं, स्पीकिंग ऑफ द सक्सेस, दैट सिंस सबको सेल्स भी चाहिए होती है, सबको कंटेंट भी चाहिए होता है, लेकिन सक्सेस भी चाहिए होती है. अब सक्सेस, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज सक्सेस, and brands, those who have achieved the success and those who haven't achieved the success, there is a bridge and there's a very thin line between that. Kindly shed some light on that. I think so. Success is that जो आपने अपनी ब्रांड के लिए विजन किया वरना अगर आप वो अचीव कर लें तो वो आपकी सक्सेस है. और एक ब्रांड की जो सक्सेस है ना, इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द कैप्टन ऑफ द शिप. ये मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया. The person who runs and owns the company is not clear about its vision, is not clear about the industry, does not know how this industry operates, will never have a successful brand. And a person who is keen, वो अपने customer को जानना चाहता है, उसके behavior को जानना चाहता है, उसके according product बनाना चाहता है, and is very clear कि मैं अगले 5 साल में क्या हूँ, 10 साल में क्या हूँ, ये industry में मैंने survive कैसे करना है, इसका structure क्या है, that person will go on lens. And one of the biggest example I'm going to give it off is Shamoon Sultan. खादी का जो owner क्या था 10 साल पहले, मिनी मार्केट में कोने में दुकान थी और लेगेसी ब्रांड्स थी आपके पास, गुल अहमद, निशात अलकरम, एंड नो वन कैन थिंक इनको कोई बीट कर सकता. बिल्कुल सही बात है. This guy brought revolution in fashion industry, and I'm talking about fast fashion retail industry. Yes. The way in 10 सालों में खादी ने इस इंडस्ट्री को एक विजन दिया ना, no one else. Internationally as well. Internationally as well. इसने पाकिस्तान को internationally represent किया. I remember जब when I was working in fashion brand, उस वक्त खादी came up with entire different strategy for categories for unstitch, जो कोई नहीं कर रहा था. उसने अपनी audience को इतने अच्छे से capture किया that came with 2-piece, 3-piece embroidered, gave them everything in budget. और उससे वो इतना स्केल किया कि बहुत से businesses ने उसको देखा, उसको observe किया और अपने मॉडल को उस पर स्विच किया. वरना उससे पहले सारे उस रेस में लगे हुए थे, 3-piece 7,000 6,000 का जोड़ा, and there was a point जहाँ economic आपको hit constantly back to back मिल रही थी, and you had to evolve. So that was the one revolution that Khadi brought in the industry, and the second was the retail experience. जो खादी ने अपना कराची में सबसे पहले concept store खोला था. I was in Karachi and visited it, and I was amused. What an experience. And I remember I was talking to the experts at that time, and they were like, नहीं ये तो बेवकूफ़ है, क्या ये overheads बढ़ाने वाली बात है. लेकिन आज आप देखेंगे जितनी भी major fashion retail brands हैं वो सारी उस दौर में लग गई हैं. So he's a futuristic person. He has a vision, और जो उसकी success है आज वो अपने vision पे understanding of the business and its audience. लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोग, ऐसे businesses को या businessman को भी, business owners को भी जानती हूँ जो कि समझते हैं कि ठीक है ये बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, प्रॉब्ली उनकी बैंकिंग या किसी टेक्निकल फील्ड की बैकग्राउंड एंड दे लाइक ठीक है इस वर्क को हायर करेंगे, इसको करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे. That's not how this business. It's the passion. It's not the investment industry, itself. If you don't respect this industry and how it operates, this industry, no matter आप कितना भी पैसे लगाने, it will never give you return. It's because passion and investment, देखें दोनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए. लेकिन true, I agree कि आप fashion apparel के अंदर it's passion, it's understanding, it's experience as well. And you shared your experience. I'll share my experience as well. While you were speaking, this thing came up in my mind. Few months back, मैं मेरी मिसेज तो हम निकले. We were going to MM Alam. हमने एक फैमिली डिनर पे जाना था, तो आई वाज गेटिंग लेट एंड ऑल ऑफ अ सडन माय वाइफ शी आस्क्ड मी कि हमने कोई शॉपिंग की है या नहीं की है, विल गिव सम गिफ्ट. तो आई थॉट ओके हम खाड़ी से ले लेते हैं, बिकॉज खाड़ी की जब मालूम वाली शॉप है, यू पार्क द कार एंड यू जस्ट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, यू कैन गो इन एंड आउट क्विक. तो माय वाइफ शी सेड मी ओके लेट्स गो. मैंने बोला नहीं, यू वोंट गो, यू सिट हियर, आई विल गो एंड आई विल कम बैक. I told her if you can do the shopping in 5 minutes, it's fine. Otherwise, I'll go. She says no, 5 minutes it's not possible. I
swear, I parked the car, गाड़ी भी बंद नहीं की, she was sitting in the car, मैं अंदर गया हूँ, boom, I entered. अब मुझे पता था कि I entered, मैंने the store salesmen, they were busy. I saw यहाँ पे 3 piece लिखा हुआ है, यहाँ 3 piece लिखा हुआ This है, is the और ये VM and branding power of the yes, communication. I think so Beechtree में इस चीज पे हमने बहुत कीनली काम किया था, क्योंकि उस टाइम पे रिटेल स्टोर्स इवॉल्व कर रहे थे. इट इज सो इम्पोर्टेंट आपकी. सो देयर आर टू पॉइंट ऑफ सेल्स, एक ई कॉम है, एक रिटेल है. रिटेल इज वेरी टेक्निकल एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू गेट थिंग्स फिक्स देयर एज वेल. आपका कस्टमर स्टोर में आ रहा है, उसके पास इतनी कैटेगरीज है, उसको इंस्टेंटली कम्युनिकेट हो जाएगी, अच्छा 3 पीस इधर है, प्रेट उधर है, वेस्टर्न वेयर उधर है, सेक्शन उधर है, so that the person can easily navigate and the communication is very बिल्कुल important. यही एक्सपीरियंस आगे जाके ई कॉमर्स में आया. तो लुक, फॉर मी खाड़ी इज बेस्ट, इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज मैं आया, Yeah. मैं रोज शॉपिंग करने वाला And भी नहीं Khadi हूँ. started all this trend. यस, मैं रोज शॉपिंग करने वाला भी नहीं हूँ. मुझे क्या अच्छा लगा कि ऊपर लिखा हुआ था 3 पीस, 2 पीस, 1 Yeah. पीस. मैंने 3 पीस को सिलेक्ट किया, उसके बाद 3 पीस के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे 6000 प्लस का है, ये 8000 प्लस का है, 7 का. मैंने अपनी कैटेगरी चूज की, प्राइस चूज की. उसके बाद मैंने उनसे आई आस्क वन ऑफ द गर्ल की इसमें से हॉट सेलर कौन सा है. शी टोल्ड मी दिस इज द हॉट सेलर. I picked it because it's what I saved you time and you got it's, the yeah, right trust product. me, मैं 6 मिनट में पैसे दे के गाड़ी में बैठ चुका हुआ था. और इसमें this आप is the समझे कि experience, ये कस्टमर एक्सपीरियंस, आई विल नेवर फॉरगेट दिस. इसमें कस्टमर बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है कि आजकल कस्टमर्स के पास टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है. वी वांट एवरीथिंग क्विक. आप ऑनलाइन भी हैं, ऑप्शन है, ये पसंद आया खरीदो, स्टोर गए, ये सो और फास्ट फैशन का मतलब भी यही है. ये तो फॉर्मल, ये सेमी फॉर्मल तो नहीं है कि आप देखेंगे ये क्या है, खरीदो, पहनो, इट्स पहनो एंड यू डन. Yes. So ये जितनी बारीकी में these things are so important, जो बहुत ही ब्रांड नेगलेक्ट भी करती है, लेकिन if you're looking into these micro stuff will actually make your brand distinguish from the other. True, सही हो गया, very good, fair enough. मुझे ये बताएं कि we'll talk about since you're an industry expert, how do we scale up the business? Okay, scaling, I love this part. Please. Scaling business is so important. आप एक वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको स्केल, वो वेंचर स्केल नहीं कर सकता ना, there is no need to think and invest in it. At the end of the day, you're a business person, you need returns. True. So scaling में आप अपने सेगमेंट को देखिए. आजकल पाकिस्तान में जो सबसे गोल्डन सेगमेंट है ना, वो मैस मार्केट है. हालांकि वो सबसे चैलेंजिंग भी है. आपकी मैस मार्केट आपको बहुत, अगर फैशन ब्रांड की मैं बात करूँ, तो आपने अगर अपनी ब्रांड को एक ह्यूज रिटेल लेवल पे करना है, तो आपको मैस मार्केट को टारगेट करना ही करना है. आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट लानी ही लानी है. आपको फास्ट फैशन में वैरायटी देनी ही देनी है. बट उसका एक ड्रॉबैक भी ये होता है कि जब इकोनॉमी पे हिट आता है, तो सबसे पहले फास्ट फैशन रिटेल को ही हिट आता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो परचेज पॉकेट है वो मैस मार्केट की हिट करती है, नीश की नहीं करती. सो आपका जो ट्रांजैक्शन होती है पर बाइंग पे, वो अफेक्ट करता है. कि एक औरत आई है स्टोर, पहले आपकी इकोनॉमी इज गोइंग वेल, शी इज गोना बाय 2 अनस्टिच, 1 प्रेड, 1 शू, ज्वेलरी, 30 ml की परफ्यूम, क्रॉस सेलिंग हो रही पूरे स्टोर में. जहाँ इकोनॉमी पे हिट आया, वहाँ पे एक अनस्टिच से एक प्रेड या एक जूते पे आप एग्जिट कर रहे हैं. सो मैस रिटेल scaling is always challenging, but it is always fruitful in terms of. But if the product is economical, and considering this thing when you're making the product, this is what basically यही तो हो रहा है कि जो डिजाइनर ब्रांड्स हैं वो 50,000 लाख रुपए का ड्रेसेस बनाते थे. अब नाउ दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन क्रॉस स्केलिंग पे आना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेलिंग, हां बिल्कुल, फाइजा सेक्लिन हैज चेंज्ड द प्राइसेस. यस, स्केलिंग इज नॉट कि आप अपनी कैटेगरीज, आप अपनी सब ब्रांड्स में स्केल करें. बीचट्री वाज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल. मोरबाग बाय बीचट्री वाज गिविंग इक्वल बिजनेस एज अनस्टिच बाय बीचट्री. और मैं समझता हूं इट्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रांड एंड द एंड यूजर. तो अगर मैं सिर्फ 50,000 रुपए का ही जोड़ा लेना है और शादी या मेहंदी के लिए लेना है, तो मेरे साल में 1 दफा या 2 दफा शादियां होती हैं, तो कनेक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी मेरी आपके साथ. मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब मैंने किसी ओकेजन में जाना है, तो आई विल गो एंड आई विल टच दिस ब्रांड, बट डे टू डे सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. बहुत सारे ब्रांड्स ने, Baruch is doing great as well. I would like to segregate. There is fast fashion retail and there is a luxury formal industry. Yes, yes, please. बहुत अच्छे से revolutionize हुए. बहुत अच्छे से. सबसे पहले आपके पास सिर्फ डिजाइनर्स ही होते थे. जब हम छोटे होते थे, it was just दीपक परवानी और HSY नोमिन, सारी आपको इनका ही पता था, and you knew कि you can't afford these. ये पर्सपेक्टिव भी सेट था. The way I would like to say, the way other market people brought the revolution in luxury formals, it's amazing. They came brought up with the revolution brands, in the industry, and together us, because with the digital, they partnered, yes. and I think so digital has played a very important role with them. So they revolutionized by coming up with, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है प्रोडक्शन में, सोर्सिंग में, उन्होंने पकड़ा हाई एंड डिजाइनर्स के आउटफिट्स को बड़ा स्मार्टली, फुल एम्ब्रॉयडर्ड मशीनी काम पे एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट को लाया. बट जो उनकी बैकबोन थी वो डिजिटल पार्टनर्स थे.
जिन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने उनकी प्रोडक्ट को उनकी ऑडियंस तक लेकर So I think it's fair enough. It's fair This was, to. if I I say, think yes, true. It's this is fair. a beautiful partnership. Beautiful I feel partnership, like yes. fast fashion में मैं एक चीज चल रही है वो सालों से चल नहीं, वो रही है ब्रिक एंड मोटर का भी उसको एज मिल रहा है. लेकिन ये जो नया रेवोल्यूशन आया था ना, ये this is amazing. It's fair to say that these people have really, people of the Azam market, these Yeah. people have really scaled their They business. are smart business people. Yes. And all जो चीज उनकी forte नहीं है, वो creative part नहीं है, वो उसमें they shook hands with people yeah. like you and us. yeah, अगर they उनको that's where marketing we का नहीं got our पता. Yes. edge and where we came for our Yes, service, true. क्योंकि हमारा fast fashion में एक extensive experience था, उससे हमने एक को support किया. They brought amazing products for the customers in you, and I brought services. कितने for लोगों की इंडस्ट्री में जगह बन गई. So yeah, it's fair to say that these people have really scaled up their businesses. But they shook hands with us in an That's industry. a prime example of scaling. Scale, ये बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए conversation करते करते we were talking about scaling the businesses. So we were discussing brick and mortar. We were discussing high-end couture brands as well. But this is such a different ये एक नई segment in niche, market. ये एक नई niche बनी, ये एक नई the domain इन्होंने बना दी. या तो आप ले रहे थे brick and mortar से, या तो आप ले रहे थे designer से. These people were not existing. They did existed. बिल्कुल. But हमारी रसाई इन तक हासिल नहीं थी. बिल्कुल. या फिर आप अगर लाहौर में तो लिबर्टी मार्केट जा रहे थे या नारकली जा रहे थे, तो इन लोगों ने literally आपको फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप प्रोडक्ट ले रहे थे, नाम तो पता नहीं था. बिल्कुल. सो इन्होंने उन चीजों को भी अपने ब्रांड इन्होंने उन बना चीजों के लिए बनाया. तो इन्होंने these people, you know, I have decided this to call people those who have really added value into this industry in scaling up the businesses, and you know, we'll be discussing their journey as well. And I'll say together both of us should ask them, because हम दोनों वो road, हम ये एक dual way road था जिसपे उन्होंने they shook hands with people like you, जिनका experience creative में, social media marketing में, with then people like us, those who are digital pioneers in Pakistan, in Lahore, especially in this industry. And trust me, it's not easy to work with these people, because you need to understand them. In the meantime, इनके अंदर CEOs भी है, सेट कल्चर भी है, और पैसे की वैल्यू है. ये नीचे से ऊपर आए हुए लोग हैं, ये वो नहीं है. They were born with golden spoon in their hand. They went to HSL or they work here and there. These are the people who sat in the market and they know the गाहक कौन. Because I truly know there are few brands in the market. इसने बहुत अच्छा किया है. So I must say I had amazing experience with this segment. जब I entered into this segment, I was quite surprised कि ये भी एक industry exist करती है. And you're blessed. देखिए, एक कैरियर में आपको एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए था Beechtree, फिर मोरबाग, उसके बाद ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कि you started working with these brands, और ये वाले जिनको हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए जो ना आटा बनाने वाली एक मिल है, अंदर चले जाओ, आटा बन रहा है, बाहर आ रहा है, कपड़ा बन तो रहा है, कहाँ जा रहा है. And you trust me, we are one of the biggest producers of fabric in the world. Yes. And जिस तरह हमारा, अगर मैं शिफॉन की स्पेसिफिकली बात करूं, जितनी कदर दुनिया भर में, I've seen the numbers of these brands, UK, Australia, Germany. You've done a deep research on chiffon as well. 40 to 50% of your online sales internationally from these luxury chiffon. And और when it comes to international, फिर एक तो है पाकिस्तान की ऑडियंस है. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया से मंगा रहे हैं, हम उस ऑडियंस की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं. It's a whole another subject and topic कि इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे लिए तो वो दुबई, बांग्लादेश रीजन में जा रहे हैं ना. अगर इंडिया में नहीं जा रहा है, आप दुबई में जा रहे हैं, यूके, यूएसए में जा रहे हैं, तो यू नो, इफ वी एनालाइज द डाटा, वी विल कम टू नो कितने इंडियंस, जितना इंडियंस कम्युनिटी को लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अब्रॉड, you know, they have an entire complete knowledge of Pakistani brands, and they respect the design, the fabric. That's true. That's and very true. It's a you know, very it's proud a big, moment. yes, I remember और ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा revolution लेके आया. I was born in Dubai, you know, I was a kid, so I used to go with my mother. दुबई में the निशीज करके ना एक बहुत बड़ा नाम था उस दौर में. I'm talking about 20-25 years back. वो इंडियंस थे. तब पाकिस्तान का फैब्रिक वहाँ पे नहीं आता था. और my mother, she was a lover of lawn. मतलब my mother, the whole her life she weared lawn. और लॉन के लिए वो जब पाकिस्तान आती थी, उस टाइम ये ब्रांड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. वी यूज्ड टू, यू नो, वी आर फ्रॉम इस्लामाबाद, हम वो जाते थे वहाँ पे रावलपिंडी में राजा बाजार या कोई भी कमर्शियल मार्केट, वहाँ पे जाके तो लॉन के प्रिंट्स और डिजाइन्स पड़े हुए होते थे. एंड वी यूज्ड टू रैंडम पिक देम एंड वी यूज्ड टू टेक देम, सारा करते थे. इट वाज लवली डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू. इट्स एक घंटा आई थिंक टाइम जो है ना, ये बहुत कम है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देयर आर सो मच हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डिस्कसिंग दिस विद यू. लास्ट टॉपिक इज दिस, द लास्ट क्वेश्चन इज दिस. काइंडली tell us, what do you think about women empowerment and startups इनके लिए, and youth, इनके लिए क्या मैसेज है आप? Okay, so women empowerment, आज की जो खातून है ना, I think so she's a wonder woman. She can do everything. Yes, true. वो आप एक $1 billion कंपनी को भी चला सकती है, वो अपनी फैमिली को भी चला सकती है, वो अपने आप के लिए भी she can take out time and serve her well. So
खवातीन आजकल वंडर, आप जितनी भी फैशन इंडस्ट्री देखें, मारिया बी को देख लें, सना को देख लें, खदीजा शाह को देख लें, दीज आर दे हैव सेट ट्रेंड फॉर दिस इंडस्ट्री. इन्होंने एक्चुअली इस इंडस्ट्री को revolutionize किया. सो जो कमिंग टैलेंट है ना, उसको तो मैं कहूँगी कि please don't listen to others when they say there's no job market, Pakistan में कुछ नहीं रहा, and you know there's crisis. No, there's wonders to do, and especially in the time of digital era. अगर आप जॉब भी नहीं 9 to 5 करना चाहते ना, आप डिजिटल कंटेंट साइट, कंटेंट मेकिंग साइट पे आ जाए. जिस तरह ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ने इतना रेवोल्यूशनाइज किया. Natasha Vakas is a big example of it. Exactly. Everybody's watching Natasha Vakas. What was she? She was nothing. Nothing. Not educated है ना कुछ, but she started sitting at home. She started making the content, and trust me, वो कहते हैं ना कि जो whatever the content she's making, it's hit. क्यों? क्योंकि उसके पास followers हैं. मरियम परवेज को देख मरियम रहे हैं. परवेज, yes, बिल्कुल. अच्छा, when I came across Mariam Parvez content, probably I couldn't connect, but masses does. Masses believes her, and with digital. She has changed the whole perspective because yes. और क्या उसकी सक्सेस थी? वो बहुत रियलिस्टिक थी, रिलेटेबल थी. अब ब्लॉगर इंडस्ट्री जो कोलैबोरेटिव है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी फेक हो गए और थोड़ा सा भी स्पॉन्सर्ड नजर आ गए, आपका क्रेडिबिलिटी. अच्छा, एक चीज अब मुझे अच्छी लगती है, हर इंसान के अपने नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ सेट एसओपीज होने चाहिए. मरियम परवेज डेफिनेटली कहना किसी भी इन्फ्लुएंसर की तरह वो यू नो शी चार्जेस यू एंड शी गिव्स यू द कंटेंट, बट वन थिंग इज दिस, डजंट उसके पैकेज में ये चीज डज नॉट कम with the money, that she will not give you recommendation or she will not recommend the users until she has experienced the product. और it's Mariam Parvez approved. Yes. और उससे आप उसकी सक्सेस देखें कि जहां YouTube gave her a success, she took an opportunity, she started her own makeup brand, which is like, if you see the number of sales, वो नंबर ऑफ सेल्स के अलावा अगर आप एक अपैरल के ब्रांड है तो मे बी 5 लाख रुपए में वो आपको पीआर कर देगी, लेकिन अगर आपका कॉस्मेटिक का ब्रांड है 1 मिलियन से नीचे की पीआर ही नहीं होगी. Lara Ibrahim is an example. Yes, Lara Ibrahim, she's in UK, you know, the other day I was speaking to her, तो she's amazing यार. उसकी भी engagement I was going through because the other day I was trying to find out those कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पोस्ट लगाती है, उनकी इंटरनेशनल जो है ना फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वो इट मैटर्स टू अस अ लॉट, टू अस अ लॉट, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 30-35 हज़ार रुपए से की ज्यादा है, तो यू नो वी ट्राई टू हायर दोज पीआर इन्फ्लुएंसर्स जो अब्रॉड और इंटरनेशनली जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और ये ओवरऑल एंगेजमेंट है. ट्रू, ये बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी. आई थिंक this is I think we have already covered most of the part. We have covered women empowerment, marketing, scaling business, content, सारा कुछ जो रह गया इंशाल्लाह ताला we'll have you. ठीक है. Thank you very much coming, Nabia. God bless you. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. Thank you.